The one place that really knows how to do the macaroons are. And the plot twist in the end is amazing. मतलब आप सोच भी नहीं पा best believe कि अगर वो book इस list में है, so it is really good. और one thing I was obsessed in the month of January. Hello, namaste. I'm Navija and welcome back to my YouTube channel. With this video, we are starting a new series here on my channel, which is going to be monthly favorites for the year 2026. I have literally grown up watching these videos on YouTube और मुझे इतना अच्छा लगता था टू सी एवरी मंथ कि ये मंथ मेरे फेवरेट क्रिएटर ने जिनको मैंने सब्सक्राइब किया उनको क्या पसंद है, वो लोग ने क्या खाया, उनका क्या फेवरेट था जिसको मैं बाय कर सकती हूँ बिकॉज दे आर बेसिकली रिकमेंडेशंस, राइट? सो आई यूज्ड टू लव वाचिंग दिस वीडियोस. इसीलिए आई थॉट कि ऐसा तो कोई नहीं है कि इसका ट्रेंड चला गया है एंड आई लव मेकिंग दिस वीडियोस. आई होप कि आपको देखने में उतना ही मजा आएगा, which is why these videos are going to be having multiple categories like food, movies, series, books, makeup. You think of it and it's going to be in this video. So without a long intro, let's just get started with the first category. If you're interested, keep on watching. The first category I have is food. सबको हेल्दी खाना है आजकल, पर ये चटोरे मन का हम क्या करें, राइट? तो उसके लिए माय फर्स्ट प्रोडक्ट इज समथिंग दैट आई हैव बीन लविंग इन माय हाउस, व्हिच इज दीज फैमिलीज के दे आर कॉल्ड एज द मखाना मंचीज एंड दीज आर द एग्जैक्ट, व्हेन आई से एग्जैक्ट रेप्लिकास ऑफ द कुरकुरे का जो मसाला मंच, द ऑरेंज पैकेट, एग्जैक्ट है ये. But they are made from makhana flour, which is, I won't say it's the healthiest, but अगर आपको खाना ही है कुछ जंक तो it is मतलब exact same taste wise. तो फिर आप इस पे switch हो जाओ जैसे हमने किया है and you will love it. ये Blinkit, Amazon Fresh सब पे available होता है आजकल, so it's very easily available. So please do try that. Next thing that I have on this category is something we are obsessed with, and especially me. आई लव मैक्रून्स एंड मैक्रून्स इतने गंदे मिलते हैं ना कहीं कहीं, मतलब वो लोग खोल देते हैं कि हम मैक्रून्स बनाते हैं पर उनको बनाते तो बिल्कुल भी नहीं आते. दे आर जस्ट लाइक बिस्किट्स, तो वो हमको नहीं पसंद आते हैं बिल्कुल भी. द वन प्लेस दैट रियली नोज हाउ टू डू द मैक्रून्स आर लव 15 इज व्हाट आई हैव रियली गूगल्ड कि उसको बोलते कैसे है. सो इसकी जो शेफ है, शी वॉज ऑल्सो अ शेफ ऑन मास्टर शेफ इंडिया, एंड ऐसा बोलते हैं लोग कि शी इज सो अक्लेम्ड फॉर हर मैक्रून्स दैट इवन द पेरिस के जो शेफ्स है जहाँ से एक्चुअली मैक्रून्स आते हैं, दे ऑल्सो लाइक रियली लव हर मैक्रून्स. सो इफ यू वांट टू ट्राई मैक्रून्स, आप कोई भी दूसरी जगह पे मत जाना, ट्राई फ्रॉम दिस प्लेस. द नेक्स्ट कैटेगरी इज गोइंग टू बी मूवीज एंड सीरीज, जो सबका फेवरेट होता है. कभी कभी तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है कि टाइम तो है लेकिन क्या देखे अभी ये टाइम में, वो सूझता ही नहीं है. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू ऑल 3 such series that I watched in January, which I loved so much, which is why I'm going to be telling you all कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप ये सीरीज जरूर देखना. Number 1 on my list is All Her Fault. This is on Jio Hotstar, and this is about, the series starts about a child which is kidnapped, and then the entire episodes are based on who kidnapped, why they kidnapped, and the plot twist in the end is amazing. मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे ऐसा plot twist है, and we really enjoyed this one, so give it a watch. The second one on my list is Bhay. This is on Amazon Prime, and it is about Indian. It is based on real events, and it is about a person who was Gaurav Tiwari, who was the paranormal investigator, India's first paranormal investigator, who is now no more. But it is based on his cases and what happened with him, and the screenplay, the dialogues, the songs in the background, everything is so good. It's basically a horror supernatural kind of a show. आप उसको बहुत एंजॉय करोगे क्योंकि ये ना वो हिंदी जैसी हमारी पुरानी, जब हम छोटे थे वैसे कैसे आती थी हिंदी की सीरीज, जो एकदम ही मतलब उसको हॉरर भी बोल नहीं सकते, वैसी नहीं है. आई एम टेलिंग यू, इट इज रियली गुड. डू गिव इट अ वॉच.
नंबर 3 ऑन माई लिस्ट इज नॉट लाइक थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर, जो मैंने आपको पहले ही तो बताई वैसी नहीं है. इट इज अ वेरी, आई वोंट से इट्स लाइट, इट्स काइंड ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अभी तक इंडिया में ज्यादा स्पोकन अबाउट नहीं है. द सीरीज आई एम टॉकिंग अबाउट इज परफेक्ट फैमिली. It is on YouTube and it is a special series, so you have to pay, I think, a membership fee of, it's very nominal, I think it's 56 rupees to watch all these episodes, and it's completely worth it. It is about a child who is living in a joint family, suddenly starts experiencing anxiety attacks, and her school counselor recommends family therapy because the family environment is causing her to feel what she is feeling, which is why they suggest family therapy. And then what unfolds, and it's really interesting. It is written by Pankaj Tripathi. So it is very very interesting कि अभी इंडिया में ये टॉपिक से भी बात होने लग गई है. The show is superb and you should give it a watch. The next category is books. Now I don't know अगर ये इतना शोकेस हुआ है मेरे चैनल पे, I don't think so, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कंटेंट अभी तक नहीं डाला है on my channel. But I love reading books. I am a book girl and I love reading I'm not a very non-fiction kind of a girl. I love reading fiction, especially love stories or like thriller, suspense, horror, all of that. So I thought कि मैं ये category भी मेरे monthly favorites में add करूँगी, because I know many of the viewers love reading books, लेकिन क्या पढ़े वो नहीं पता है. Which is why I'm going to be adding 1 or 2 books every month which I love reading. And बेस्ट बिलीव कि अगर वो बुक इस लिस्ट में है सो इट इज रियली गुड, और आप आंख बंद करके उसको रीड करना चालू कर सकते हो. माई बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज हाउसमेड. सो आई नो कि ये बुक ना मैंने जनवरी में नहीं पढ़ी है. आई वॉज रीडिंग सम अदर बुक इन जनवरी विच विल कम इन द फेब का मंथली फेवरेट्स, बिकॉज आई हैव रीच द एंड ऑफ द बुक एंड इट्स अमेजिंग. तो अगर आपको वो बुक जाननी है तो आपको फेब का वीडियो देखना पड़ेगा. दिस बुक आई एम टेलिंग यू ऑल बिकॉज इसकी ना मूवी भी आई है अभी थिएटर्स में. So if you don't want to read the book and directly want to watch the movie, then the movie is also a very very well directed movie. मतलब कोई ऐसी मूवी जो जिसने बुक को बचर नहीं किया है. It is a well directed movie, so you can give it a watch. In case you want to read the book, please go ahead and read it. I have finished this book in like 2 days, 1.5 days actually. I have inhaled this book, okay, along with my college I had done that. So it is a very good book. It is about a girl Millie who goes and works as a housemaid in a house, and then what all things happen, what are the circumstances जिसमें वो पड़ जाती है, क्या होता है. I'm not going to say much because I don't want to give the plot away. And the twist is something you have not even imagined. I can tell you that. So give it a read if you're interested. My next category is music. Now, another fun fact about me, I love Hindi Bollywood music. I love singing. I have learned singing for a few years when I was in school. So I still love to listen to new music, sing along. So for this month, my favorite that I have listened on loop is Gehra Hua from the movie Dhurandhar. It is sung by Arijit Singh. I love Arijit Singh के songs, but this song is so amazing कि आपको realize ही नहीं होता है कि ये 6 minutes का song है, which is so unusual. But आपको feel ही नहीं होगा कि आपने 6 minutes कोई गाना सुना है. So if you are a music person and you love it, please listen to this song and let me know in the comments down below if you really liked it or not. Next category is going to be Amazon finds. Now, I am an Amazon girl through and through. I love ordering things from Amazon. So I thought I want to add this category in my videos because अगर मैं वो चीज़ को बहुत यूज़ कर रही हूँ और वो आपके यूज़ की भी है तो आप उसको easily buy कर सकते हो Amazon से. The one thing I was obsessed in the month of January is the Bath and Body Works की candles. I know कि मैंने ये एक पहली मेरी वीडियो में भी सजेस्ट किया था. That was a gifting video if I'm not wrong. I want to mention it here again because I did not use it as much back then. मैंने 1-2 बार यूज किया था and I loved it. पर फिर मैंने उसको साइड में रख दिया था for some reason. मैंने यूज नहीं किया. But January was a little chilly in Mumbai and I loved cozy nights. So we have been using this candle every single night
and this is the Bath and Body Works की gingham वाली वेरिएंट. इट इज अ अमेजिंग फ्रेग्रेंस. अगर आपको ये पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए तो आप Amazon पे जाके बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस है टू पिक एंड चूज फ्रॉम. Bath and Body Works के candles are something it is good to invest because they last so long and they're amazing. So give it a try in case you like that. Next category is something that I love. मतलब इसके बिना मेरा नहीं चलता है. It is the fragrance category. I am a perfume body mist पगलू. मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद है. मेरे पास इतने सारे perfumes है. Let me know if you're interested in a perfume recommendations video because I have some nice affordable perfumes to recommend to you guys. ये वीडियो में वो नहीं होने वाला है. ये वीडियो में I'm gonna be telling you all कि जनवरी मंथ में मेरा फेवरेट फ्रेग्रेंस कौन सा था, एंड इट इज द प्लम बॉडी लविंग का वेनिला वाइब्स बॉडी मिस्ट. नाउ ये आप देख सकते हो कि लिटरली इतना सा ही बचा है. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने पूरे जनवरी में इसको खत्म किया, बट आई हैव रीच्ड आउट टू दिस वन द मोस्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी बिकॉज लाइक आई सेड इट वाज अ लिटिल चिली. आई लव द कोजी वाइब्स जनवरी वाज गिविंग मी, एंड दिस फ्रेग्रेंस fit right to the mood. This has vanilla and like really cozy notes. So if you like vanilla, you like sweet fragrances, you can definitely go for this one. I have been loving this in the month of January and I know that you will too. The next category is going to be hair. मैंने ये कैटेगरी मेरे वीडियो में इसीलिए ऐड की है in case I come across any new product that I have been trying for the entire month that I think is worth it to add into my next month's favorite list. इसीलिए मैंने ये कैटेगरी ऐड की है. इस महीना मैंने ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं किए हैं जो नए हो और मैंने पहले मेंशन नहीं किए हो. मैंने एक पूरा सिट डाउन वीडियो अबाउट माय हेयर, shampoo, conditioner, anything like scalp, you name it regarding your hair, it is there in that video. I will link that video in the I button, and in case you're interested, do give it a watch. So this time the category में कुछ भी नहीं है. Let's move on to the next category, which is gonna be makeup and beauty, which is also the last category for this video. ये महीना मैंने बहुत reach out किया है to the face shop की water tint in the shade 01 pink rose. This tint is very water like, मतलब एकदम भी बेनेटिन जैसा watery texture नहीं है. somewhere in the middle like gel जैसा है लेकिन watery है बहुत. It is very buildable and it is very light on your skin. So Jan में मैंने ऑफिस में मतलब मैं usually भी ऑफिस में ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ. So I was reaching out to this tint a lot. It gives like a pinky flush to your skin, which suits really well with when the weather is a little chilly out there, little winter season. Winter तो नहीं है मुंबई में, but chilly है थोड़ा, pleasant weather है. So it really looks really nice on your skin. So I have been reaching out to this, which is why I thought I'll mention it out here. The next product that I have is the Sugar Key Nothing Else Matters Longwear Lipstick in the shade 02 Red Rush. So ये लिपस्टिक मैंने अभी करंटली भी लगाई है. It is a nice anyway, I was saying that this is the Sugar Nothing Else Matters Longwear Lipstick in the shade 02 Red Rush. ये शेड मैंने अभी भी लगाई है and I really love this shade. It is not red, it is not pink. बीच का कुछ तो शेड है and it really brightens up your face. If you have medium to fair skin tone, you're really gonna like this. I think that it will suit a little dusky skin tone as well because it's not very it won't wash you out is what I feel. It is a very comfortable wear, matte hai ye, and it is not transfer proof, let me put it out there, but it is really comfortable for like few hours. If you want a quick easy lipstick, you can definitely try this. With that said, we have come to the end of today's video. These videos are going to be a common thing on my channel in the year 2026. And if you guys love the concept of this video, to learn about the products that I have been using for the month, the food, movies, series, everything, if you have liked it, subscribe to my channel because you're going to see more of this on a monthly basis on my channel. And don't forget to like, share and comment on today's video so that I can get more such videos for you guys. And I'll see you guys in the next one.